السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جناب آج ہم آپ کو دکھائیں گے مکہ کے لگژری ہوٹلز میں سے ایک ہوٹل جس کا نام ہے ایڈریس ہوٹل، جو نیا کھلا ہوا ہے، جو امار کمپنی دبئی بیس کمپنی ہے اس کا ہوٹل ہے. ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آپ دبائیں تاکہ فیوچر ویڈیو آپ جو ہے نا آپ دیکھ سکیں. اوکے، so today we will show you one of the luxury hotels in Makkah. It's Address Hotel by MR Company. So before the starting the video, a kind request, if you have not subscribed our channel, so please kindly subscribe and like. So let's go and see the Address Hotel. ہوٹل میں داخل ہوتی ہی روایتی عربی قہوہ سے آپ کا استقبال ہوگا. ایز یو انٹر ان ہوٹل یو ول بی گریٹڈ بائی عربک کافی. آپ کو نظر آئے گی. ایز یو موو فارورڈ یو ول سی دس بیوٹیفل لابی. یہ سامنے ریسیپشن دکھ رہا ہے اور یہ رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ خوبصورت لابی بنائی گئی ہے. سو آپ کے ساتھ اگر فیملی ہے، بچے ہیں یا گروپ ہے تو یہاں پہ وہ ریسٹ کر سکتے ہیں. اف یو ہیو فیملی اور گروپ ممبرز دے کین ریسٹ ہیئر اینڈ یو کین گو فار دا کیز. آگے ایک بہت ہی خوبصورت استقبالیہ میں آپ کا استقبال ہوگا. نیکسٹ یو ول بی ویلکم ایٹ اے ویری بیوٹیفل ریسیپشن. چابی لینے کے بعد آپ لفٹ کی طرف آئیں گے. After taking the keys, you go to the elevators. Then you have to go to your floor. After coming to your floor, you have to enter in your room. آپ اپنے روم میں انٹر ہوں گے. رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ خوبصورت واش روم دکھے گا. سی ہر قسم سہولیات سے آراستہ یہ خوبصورت انداز میں بنایا گیا یہ واش روم. With all of washroom amenities, fully equipped with all kind of facilities you will find here. Check this everything. I will show you one by one. Shower area. As you see, everything available there. Shampoo, body lotion, shower gel, soap, everything is you will find there. Okay, rest area. So from here we will go out. We'll show you the rooms. Okay, now this is a sofa cum bed and एक extra bed और दो standard bed. One extra bed with window, one sofa cum bed you will see, and two standard queen bed you will find in this room. And also a lot of empty space you will find here. This is a partial haram view. Partial haram view room you will see. 4 people can fit easily in this room. 4 people can accommodate in this room. You can see the partial haram view from here. A part of haram you can see from here. So 2 queen beds, 1 extra bed and 1 sofa cum bed. 4 people in there. How many place? The enough place, and all the room accessories you will find here. Sab sahuliyat se arasta, everything. Coffee machine and tea kettle, TV screen, everything. So now we will show you another rooms and we are going to show you the suite. The panoramic suite you will see here. Okay, as you enter in panoramic suite, you will see the sitting area, or you can say the living room or lounge or whatever you want to say it. बैठने के लिए सोफे हैं, टीवी आप देख सकते हैं. जो भी रूम एसेसरीज है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. Okay, so this is the living room.
with the suite. Now we are going to take you to the view. You can see also haram view. This is a full haram view, a very nice view. You can enjoy here the haram view from this window. So we will take you now to the bedroom. आपको bedroom में लेके चलते हैं यहाँ से. Let's go to the bedroom. Okay, when you go to bedroom, on the right side you will see here one washroom. So let's check the washroom. The same washroom we show you before, so we will forward it little. Just you have the idea. We already show you all the washroom in the previous room. So the washroom are same almost. Okay, so now this is the sitting area. दो सोफ़ा बैठने के लिए है यहाँ पे. Two sofas are available for sitting. आप हरम शरीफ की खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं. And you can sit here and enjoy the beautiful panoramic view of the haram. See, mashallah, a beautiful panoramic view of haram. You can see and enjoy from these windows. You can see on the sofa, you can sit in the sofa chair are there available, and you can enjoy the mashallah beautiful view and panoramic view of haram. So I hope you will like it. So चलते हैं, आपको दिखाते हैं. ये देखिए एक खूबसूरत बेड आपका इंतज़ार. ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बेड. एक बहुत ही खूबसूरत बेड आपका इंतज़ार कर रहा है. A very beautiful and comfortable king size bed is waiting for you. See all the room accessories as I told you. You can find in every room. आराम करने के बाद जब आप हरम के लिए रवाना होंगे तो एक नई मॉडल की गाड़ी आपको हरम ले जाने के लिए गेट के सामने मौजूद है. और आफ्टर रेस्टिंग व्हेन यू लीव फॉर हरम, so a new model car is waiting for you to take you to the haram. As a nice driver is welcoming you. यहीं से आपकी शटल सर्विस का सफ़र शुरू होता है. From here your shuttle service journey is begin. So रास्ते में आप मसार के ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट जो सऊदी 2030 विजन का हिस्सा है, इससे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं. Along the way you can enjoy Masar under construction projects which are the part of the Saudi 2030 vision. ये आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से शटल सर्विस कितना दूर है और कितना टाइम लेता है. इतना नहीं है, बहुत करीब है शटल सर्विस इनका. मुश्किल से 2 to 3 minutes में आप हरम में होंगे. So the shuttle service it almost take 2 to 3 minutes and after 3 minutes you will be front of haram. Let's see, this is as I told you under construction area of Masar. This is a part of 2030 vision of Saudi. So it's will be amazing when it's complete. ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जब ये कंप्लीट हो जाएगा. सब मुसलमानों के लिए, सब मोतमरीन के लिए और सब ट्रैवल एजेंट्स के लिए एज वेल. सो ऑलमोस्ट वी आर रीच टू द हरम. यू जस्ट सी द मीनार आपको नज़र आ रहे हैं. ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं हरम शरीफ में. ये सामने आपको दिख रहे हैं. ये हम पहुंच गए हैं ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं. यहाँ पे ये गाड़ी हमें उतारेगी. So the shuttle service will drop you here. Okay. Let's see. He is going by reverse and taking his place. So यहाँ से हम पैदल जाएंगे हरम. From here we will go to the haram on foot. Hardly in 1.5 or 2 minutes we will reach to the haram.
मुश्किल से जो है ना ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगते हैं यहाँ से वॉक करने में। सो जिस भी होटल की वीडियो आपको चाहिए, आपको पहले भी बताए हम, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सी होटल की वीडियो आपको चाहिए, तो वो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। Any hotel video you want, mention in the comments the hotel name, so we will be uploaded on the priority basis. Okay, so as you see all the taxi are waiting here, और ये सारे टैक्सीज वेट कर रहे हैं सवारियों के लिए। यहाँ से आप मक्का के या जिद्दा के लिए कहीं से भी यहाँ से आपको कहीं के लिए भी यहाँ से आपको गाड़ी मिल सकती है। राइट साइड पे ये बिगिनिंग है शारा इब्राहिम अल खलील। So this is the beginning, and the right side this is the beginning of Shara Ibrahim Al Khalil, the Ibrahim Al Khalil Street, the beginning of Ibrahim Al Khalil Street, and the front as you see the Haram Sharif front of you, जैसे आपको दिखते हैं हरम शरीफ आपके सामने बिल्कुल। अभी हम हरम शरीफ में एंटर होंगे। See, before closing the video, you must have to subscribe our channel and like the video, and must be on the bell icon. You have to push the bell icon button. We are almost reached to the Haram. This is the Dar Tawheed Hotel Intercontinental. See this one, the Address Hotel, and that one is the Anjum Hotel. Okay, इसके साथ हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।